नमस्ते, मेरे पास ये एक वाटर बॉटल है। ये फेयरली न्यू है, ये पर्पल है और ये प्लास्टिक का है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस? शुड यू से दिस इज अ पर्पल प्लास्टिक फेयरली न्यू बॉटल, या फिर शुड यू से दिस इज अ पर्पल फेयरली न्यू प्लास्टिक बॉटल, या फिर शुड यू से दिस इज अ फेयरली न्यू प्लास्टिक पर्पल बॉटल? नाउ बिफोर आई टेल यू द आंसर, कमेंट में आप मेरे को बताना कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने ऑप्शन 1 या फिर 2 सिलेक्ट किया तो आप गलत हो। अगर आपने ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया तब भी आप गलत हो। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। द करेक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस बॉटल इज दिस इज अ फेयरली न्यू पर्पल प्लास्टिक बॉटल। सो हाउ डू यू नो किस ऑर्डर में इन एडजेक्टिव्स को बिठाना है सेंटेंस में? दैट्स वॉट वी विल लर्न टुडे। सो देयर आर 2 रूल्स दैट यू शुड नो। एक है थोड़ा सिंपल सा रूल, दूसरा वाला है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रूल। सिंपल रूल से काम चल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट इफ यू वांट टू यूज मोर देन 2 एडजेक्टिव्स you need the second rule. Let's start with the first rule and then we'll learn the second rule also. So the first rule is that opinions come first, facts come second. मतलब जो adjectives हम लोग use करते हैं to express opinions, they should be placed before adjectives that we use to express facts. Let's look at some examples. She was wearing a beautiful red dress. इस sentence में beautiful एक ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जो ब्यूटीफुल होगा शायद आपके हिसाब से वो ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन जो रेड होगा दैट विल बी रेड फॉर एवरीबडी। शी बॉट अ पावरफुल न्यू कंप्यूटर। पावरफुल मेरे लिए जो होगा वो शायद आपके लिए पावरफुल ना हो। जो ऑफिस में टाइपिंग करता है, फॉर देम अ कंप्यूटर विथ मे बी एन i5 प्रोसेसर वुड बी पावरफुल, बट मेरे लिए आई माइट नीड 12900K वाला प्रोसेसर का कंप्यूटर एंड दैट वुड परहैप्स बी पावरफुल फॉर मी. Right? So it is subjective, whereas new is well understood. She was carrying an ugly old bag. Again, just like beautiful, ugly भी subjective है। मेरे लिए जो ugly होगा वो शायद आपके लिए ugly ना हो। Old, on the other hand, is well understood. I hate this awful wet weather. I had delicious hot soup for lunch. So to summarize, words like delicious, ugly, beautiful, awful, awesome, these are subjective because मेरे लिए जो awful होगा वो शायद आपके लिए awesome हो. On the other hand, red, blue, wool, plastic, Indian, ये सब fixed concepts हैं. These are facts. So these facts come second and those opinions come first. Now this rule works when there is one adjective that shows opinion and one adjective that shows facts. But हमेशा ऐसा नहीं होता. To describe the water bottle, I used 3 adjectives: fairly new, purple, and plastic. So how do you decide how to arrange these adjectives? That's where the second rule comes in. Now, जितने सारे adjectives हैं, they can all be classified in some categories. When we are using these adjectives in a single sentence, then एक sequence follow करना होता है जिसको हम लोग कहते हैं order of adjectives. So this is the order that you should follow. So सबसे पहले आता है adjectives that show opinion. उसके बाद adjectives that show height या फिर size. Then we have adjectives that show physical quality of something, followed by adjectives that show condition. Then we have adjectives that show shape, then adjectives that show age. Then we have adjectives that show color and pattern. Then we have adjectives that show origin or nationality, followed by adjectives that show material. And lastly, we have adjectives that show purpose or type. So this is the order that you should remember. For example, she drank hot black Italian coffee. She bought an old French writing desk. I bought a delicious round chocolate cake on my way home. Mr. Singh recently bought a wonderful old bamboo table. She is well-known, middle-aged French businesswoman. Okay, हम लोगों ने दोनों रूल्स समझ लिया. There is one more thing that you should know. लिखने के टाइम पे हम लोग कभी-कभी एक कॉमा डालते हैं between adjectives और कभी-कभी हम लोग नहीं डालते. What's the reason behind that and how do you know when you should use a comma? Take this sentence. We ate an amazing, delicious
माउथ वाटरिंग इंडियन मील। इस सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव्स है जो ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं एंड वी यूज कॉमास बिटवीन देम, बट देन जो लास्ट वाला एडजेक्टिव है उसके और इंडियन के बीच में कॉमा नहीं है, बिकॉज दोज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। मोर ऑफन दैन नॉट ये जो एडजेक्टिव्स है जो सेम कैटेगरी के होते हैं हम लोग उनके बीच में कॉमा डाल सकते हैं, एज यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वेर ईच ऑफ दीज 3 एडजेक्टिव्स शोज ओपिनियन ऑफ द पर्सन। हम लोग अगर इन एडजेक्टिव्स के बीच में एंड जो कंजंक्शन है एंड उसको डाल सके विदाउट मेकिंग द सेंटेंस साउंड वियर्ड, then we use a comma in that case. Also, if you are able to interchange the order of these adjectives without making the sentence sound strange, then we use a comma. ये सारे adjectives जिनके बीच में हम लोग comma डाल सकते हैं उनको हम कहते हैं coordinate adjectives. On the other hand, अगर comma डालने से या फिर एंड डालने से इन बिटवीन दीज एडजेक्टिव्स अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है या फिर सेंटेंस अजीब लगता है सुनने में, देन दीज एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल्स। ही इज अ हैप्पी, लाइवली एंड वेल बिहेव्ड डॉग, विच इज द सेम एज ही इज अ लाइवली, हैप्पी एंड वेल बिहेव्ड डॉग, विच इज द सेम एज ही इज अ वेल बिहेव्ड, लाइवली एंड हैप्पी डॉग। What a thoughtful, generous, and beautiful gift. What a generous, thoughtful, and beautiful gift. What a beautiful, thoughtful, and generous gift. She's a smart, intelligent, creative, and funny girl. She's an intelligent, smart, creative, and funny girl. She's a creative, smart, funny, and intelligent girl. अगर इसके बारे में और जानना है देन यू कैन जस्ट गो टू गूगल या फिर यूट्यूब सर्च एंड वहाँ पे जाके यू कैन सर्च फॉर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स एंड क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स एंड बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे वेयर दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको एक शॉर्ट सा क्विज लेना है इस टॉपिक के ऊपर टू सी हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड इट, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वेयर यू कैन गो एंड टेस्ट योरसेल्फ। बाय द वे, आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू, अगर आपको प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्ट है मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है फॉर फ्यूचर वीडियोस देन मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकॉन को भी दबाना, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियोस। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे। टाटा।